इस सेगमेंट के पहले कंटेस्टेंट को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? शेख इकरा मोहम्मद जावेद। आपके स्कूल का नाम? अलमारिफ इंग्लिश स्कूल। आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? हाँ। आपने अपनी तकरीर सुनाई उनको? नो। क्यों नहीं सुनाया आपने? आपने बताया नहीं मैं iPlus TV के प्रोग्राम में जा रही हूँ? नो। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी अच्छी जगह पर आई हैं, अपनी तकरीर पेश करेंगे, लोगों को बताएंगे, आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया? अब जा करके आप बताएंगे उनको कि नहीं बताएंगे? बताएंगे। आप उनको कहेंगे कि iPlus TV पर हमारा प्रोग्राम आ रहा है, आप उनको देखें? ठीक है जी इंशाल्लाह, ज़रूर आप बताइए उनको। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। Respected elders and my dear brother and sister, I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Shaikh Iqra Muhammad Javed from Al-Marif English School, grade 4. Why aren't you praying? Honesty, stop and ask yourself why. Why aren't you praying? Are you denying Allah's bounty and blessing to you, or did you just happen to forget them? Do you think Allah is not worthy of being thanked for all that He has given you? Imagine if Allah was to neglect you like you neglect Him. Who will sustain you? Who will protect you? Who will give you health? If anyone was to give you something much smaller in this world, you thank them and mercifully you will feel so indebted. But no matter how much Allah gives you, still ignore Him. Why aren't you praying? It is because Salah takes too much of your time. You can happily spend hours watching a movie, listening to music or playing a game, but you cannot give straight 5 minutes of attention. Why aren't you praying? Did Shaitan convince you that you should not pray because you have other sin in your life and you are shy to stand before Allah? Do not you know that mixing Salah internationally is a great sin? Why aren't you praying? It is because you believe you still have a long life to live. You are thinking you are still young and healthy. I will start praying next year, next Ramadan after Hajj. When I get married, who are you fooling? Our graveyard out has young men and women, teenagers who thought exactly like you. There is nothing, absolutely nothing in this world that is more beautiful than possessing your head on the floor before Allah, and no feeling better and sweeter than being close to Allah subhanahu wa ta'ala. For how much longer will you wait? I would like to end my speech with an ayah of the Quran, chapter 74, verse number 42 and 43. Ma salakakum fi sakar qalu lam naku minal musallin, which means, what has brought you into hell? They will answer, and not the super. So my dear brother and sister, return to your Lord and return to your creation. Not only Allah will accept you, He will convert all bad deeds into good deeds. Never skip a prayer. There are millions in the grave wishing to come back to life only to present Allah subhanahu wa ta'ala one more time. Jazakallahu khair for listening my speech with great patience. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी स्पीच जजेस को कितना पसंद आई है, देखते हैं। बेटा माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छी तकरीर की आपने। बेटा आप नमाज पढ़ते हो? हाँ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह मज़ीद तरक्की दे आपको। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अब iPlus TV को आप टीवी पर भी देख सकते हैं। iPlus TV एक बार फिर सैटेलाइट पर वापस आ चुका है। हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाम तक iPlus TV का पैगाम पहुँच सके। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें।